Okay, so we are now again connected. So if you see, various attacks are there into the system. If we talk about the cryptography, so various attacks are there. You can see. You all know about digital signature. You all know about the digital signature. Yes, sir. What is digital signature? Sir, What is that digital is a signature? Yes, can anyone explain what is digital signature? सर डिजिटल सिग्नल एक टाइप का हमारा सिग्नेचर ही होता है। ये हमारी Yes. सिक्योरिटी पर्पस को एनहांस करने के काम में आता है। ये एक टाइप का पासवर्ड टाइप का मतलब एक टाइप का पासवर्ड भी होता है। हमारी कोई भी अच्छा, डॉक्यूमेंट ऐसा कोई भी चीज़ है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि जो बंदा एक्सेस कर रहा है वो वही बंदा है जिसकी वो फाइल ऑथराइज्ड है जिसके लिए। ओके। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ये डिजिटल सिग्नेचर मोस्टली ट्रांजैक्शंस में भी यूज होते हैं। क्लियर? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गया, मोस्टली वी यूज द डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर? So, digital signature exactly we can say it's a type of online type system through which you can authenticate your data. Clear? So no, so unauthorized person cannot access as it is digitally signed. Clear? So if we talk about the security attacks, so there are four general categories of attacks which are listed below. So देख सकते हैं that interruption. An asset of the system is destroyed or becomes unavailable or unusable. This is minute. Just wait. Yeah. So an asset of the system is destroyed or become unavailable or unusable. So this is an attack on availability, destruction of piece or of hardware, cutting off a communication line, or disabling of file management system. So these are all the part of interruption. तो इंटरप्शन में ये सब चीजें हो सकती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीस ऑफ हार्डवेयर, कटिंग ऑफ ए कम्युनिकेशन लाइन, मतलब जिससे वो चैनल से जा रहा है उस लाइन को ही ब्रेक कर दे, या disabling of the file management system. These all are the part of this. Clear? If we talk about the second security attack, that is the interception. So an unauthorized party gains access to an asset. This is an attack on confidentiality. Clear? ये confidentiality पे अटैक करता है। एक unauthorized party है जो कि asset को gain कर सकता है, मतलब देख सकता है। ठीक है? So unauthorized party could be a person, a program, or a computer wiretapping of to capture data in the network. Clear? Illicit copying of files. So एक तरह से कह सकते हैं, देख सकते हैं आप इस diagram में. So some eavesdropper is there in between the sender and receiver, and that is exactly a copying or accessing the file in between the sender and receiver. So अगर आपकी integrity loss होती है, confidentiality loss होती है, तो it means your message is somehow secrecy is lost. Clear? So message किसी ने read कर लिया, ठीक है? तो confidentiality is the major issue with the message transmission. इसीलिए हम लोग encryption यूज करते हैं। encryption यूज करने से क्या होता है कि अगर कोई मैसेज पा भी जाता है बीच में, तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन कंटेंट चेंज हो गया है। उसकी उसकी की हमने की यूज करके उस कंटेंट को मॉडिफाई कर दिया है। क्लियर? सो वो मैसेज वो रीड नहीं कर पाएगा, भले वो पा गया हो। ठीक है? Now, if we talk about the modification, so modification is one an unauthorized party not only gains access to but tampers with an asset. मतलब उसको modify भी कर सकता है. This is an attack on the integrity, changing values in data file, altering a program, modifying the contents of a message.
being transmitted in a network. So वो ऑल्टर ही कर देगा मैसेज को। आप देख सकते हैं सेंडर ने कोई मैसेज भेजा और जो बीच में हैकर था उसने उसको हैक किया, फिर उसने क्या किया, उस मैसेज को ही लॉस कर दिया, उस मैसेज की कंटेंट को ही चेंज कर दिया। कंटेंट चेंज करने के बाद उसने दूसरा मैसेज रिसीवर को भेज दिया। क्लियर? तो रिसीवर को जो सेंडर ने भेजा था वो तो मिला ही नहीं, उसको कुछ और मिल गया। तो ये इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So the original message is somehow lost in between the sender and receiver, and that is retransmitted through any other message to the receiver. So original message is distorted or lost. Are you getting? So this is the modification. Yes. If you talk about the fabrication, so in this type of scheme, what will be there? An unauthorized party inserts counterfeit object into the system. This is an attack on authentication. So insertion of spurious messages into a network और एडिशन ऑफ रिकॉर्ड्स टू ए फाइल। अब आप यहाँ देख सकते हैं सेंडर ने कुछ भेजा ही नहीं था, जो भी आपका बीच का मीडियम था, जो उसने रिसीवर को कोई मैसेज भेज दिया, रिसीवर विल प्रिज्यूम दैट इट इज सेंड बाय द सेंडर। क्लियर? सो अनऑथराइज्ड पार्टी इंसर्ट करती है कोई भी मैसेज या ऑब्जेक्ट इनटू द सिस्टम, एंड दिस विल अटैक ऑन द ऑथेंटिकेशन authenticity of the system. So insertion of any spurious type of message in a network or addition of records to a file may lose the integrity also. So attacks की बात करें तो passive attack is one of the very most important cryptographic attack. So passive attacks are in the nature of eavesdropping on or monitoring of transmission. The goal of the opponent is to obtain information that is being transmitted. So passive attacks भी आपके दो तरीके के होते हैं, release of message content and then traffic analysis. Okay. So a telephone conversation, an email message, and a transferred file may contain sensitive or confidential information. So we would like to prevent the opponent from the learning the content of these transmission. So traffic analysis की बात करें, if we had encryption protection in place, an opponent might still be able to observe the pattern of the message. कि मतलब आपने सब कुछ लगा रखा है इंक्रिप्शन वगैरह, तब भी अपोनेंट उसको एनालाइज कर ले रहा है. So the opponent could determine the location and integrity of the communication host and could observe the frequency and length of the message being exchanged. The information might be useful in guessing the nature of the communication that was taking place. Clear? So now we will continue with further in the next lecture. We have also the active attacks. Passive attack के बाद active attacks है जिसमें आप देख सकते हैं masquerade, that is one entity pretend to be a different entity, उसको दूसरे entity में convert कर दिया. Replace, then modification of message, denial of service, ये सब आपके एक्टिव अटैक्स का पार्ट है. ठीक है. Yes, sir. सिमेट्री की के बारे में बात करें तो सिमेट्री की में जो भी एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कीज दोनों सेंडर एंड रिसीवर्स के पास होती हैं, जिसको सिमेट्री की कहते हैं. ठीक है. सिमेट्री की शेयर की जाती है सेंडर और रिसीवर दोनों को सेम की. ठीक है. तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, एनक्रिप्शन की इज मेड पब्लिक बट इट इज computationally infeasible to find the decryption key without the information known to the receiver. ठीक है. So this is what public key. So we will discuss in the next lecture. Now continue with the next lecture. I think we are only connected with the 5 persons. So now we will continue with the next lecture further on. Okay. Okay, sir. So Thank you, sir. thank you very much.